edited by Sehyr Mirza. The moderator for the session is Sharif Awan. Sharif Awan is a writer, culture revivalist, and curator-producer of classical folk and world music of Pakistan. He is currently the founder-director of Tehzeeb Foundation of Pakistan, an organization working for the promotion, preservation, and archiving of classical heritage, music, literature, and fine arts. Over to you, Sharif sir. बहुत शुक्रिया जी. आप सारे दोस्तों का खैर मकदम. मेरी उम्र के या मुझसे कुछ कम या कुछ ज़्यादा जो लोग हैं जो इस वक्त बैठे हैं वो सारे वो लोग हैं जो इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तकसीम थी उसके वक्त नहीं पैदा हुए होंगे, लेकिन उसके बाद की नस्ल है. लेकिन हम तक वो सब कुछ पहुंचा 10 साल बाद, 15 साल बाद. जो चीज़ें इस अरसे में हो चुकी होती हैं वो हमारी यादाश्तों में बहुत अच्छे तरीके से हमें मालूम है कि वो कौन सा तजर्बा था जिससे हमारी ये आबादियाँ उस से गुज़री. मैं उस नस्ल से मिला हूँ जिन्होंने हिजरत की. मैंने वो बैलगाड़ियाँ भी देखी हैं जिन पर हिजरत हुई, और मैंने वो बैल भी देखे हैं जो चल के अमृतसर से समझे हैदराबाद सिंध तक पहुँचे होंगे. ये मौजू ऐसा हुआ है हमारी तारीख़ में पिछले 76 साल में कभी इरेलेवेंट नहीं हुआ. इसकी करेंसी कम नहीं हुई है. ये हमेशा करंट रहा है. लोगों ने सोचा भी है और उस पर लिखा भी है. शुरू में तो बहुत कुछ लिखा गया था, लेकिन उसके बाद बीच में कभी कभी हमारी कौमें ऐसी हैं, हम मेंटल ब्लॉक लगाना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं सकता. पिछले 10-12 साल पहले एक इनिशिएटिव हुआ कि लोगों ने अपनी ज़ाती कहानियाँ जो अनरिटन फॉर्म में ओरल हिस्ट्री के तौर पर दी. वो बहुत कमाल का काम हुआ. हमारी नौजवान नस्ल तक वो चीज़ें पहुँची हैं. इस मौजू पर आखिरी या अब तक का जो आखिरी काम है वो बड़ा एक वक़ी काम हुआ. द अदर इन द मिरर. द अदर इन द मिरर इज़ स्टोरीज़ फ्राम इंडिया एंड पाकिस्तान. सहर मिर्ज़ा ने एडिट किया है उस किताब को और योदा प्रेस न्यू दिल्ली से ये शाया हुई है. आज का हमारा जो मौजू है वो ये किताब है दी अदर इन द मिरर. अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक हम इसका उर्दू तर्जुमा करें तो मेरा ख्याल 10 जुमले बनते हैं बहुत खूबसूरत. सहर मिर्ज़ा बहुत एक लायक होनहार ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इनका काम जो है वो शेयर्ड हिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया पर ज़रा ज़्यादा है. ये किताब इनकी पहली किताब है और बाकायदा सोच समझ के इसको प्लान किया गया. इन्होंने डिग्री इनकी इंग्लिश लिटरेचर की है गोल्डस्मिथ से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और समाज एक तंजीम है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही उम्दा तरीके से एक बड़ा क्रिएटिव काम ये लोग कर रहे हैं. ये ख़ुद और अम्मार नसीम मिल के लाहौर में. मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और हम ये चाहेंगे कि ये जो स्टोरीज़ हैं इनकी अपनी जो कहानी है वो आप खुद ही मेहरबानी करके शुरू करें. Thank you for the introduction. I'm glad to be here to talk about my book. जैसा कि अभी शरीफ अवान साहब ने पार्टीशन के बारे में बात की, मेरा ख्याल है कि पार्टीशन कैन नॉट बी कन्फाइंड और placed within a specific period of time. There were events which led to partition. For example, the idea of two-nation theory was propelled and proposed much before the actual migration started happening in August 1947. And similarly,
we see the implications of partition that are, we still facing those till date. So partition, in my opinion, is an ongoing project. And if we talk about, specifically talking about short fiction, the genre of short fiction, I thought that there was a lack of a body of work that could collectively counter the narrative of hate, the dominant state narrative that we get to see a lot on both sides of the border these days. And it's, the hate, the fanaticism is on the rise. So this work for me was also an act of undoing the partition by bringing together authors from both the countries. So there are 20 authors who've written, contributed short stories to this project. And the book begins with Gulzar Sahab's story, which is set against the backdrop of partition. And then, it takes us, the book chronologically takes us down to the present times. So we see the 50s, we pass through the 60s era, 70s, 80s, and then till the 2000s. So the thing is that, like I just talked about, the growing hatefulness and the narrative of hate. So for me, this is 20 authors coming together to counter that narrative and coming up with a counter narrative of compassion, tolerance, peace. So this is what we get to see through these stories, these 20 stories. And जब ये किताब last year launch हुई, तो I received a message from a very well-known film director, Bollywood director. His name is Amitabh Singh. He's उनकी पंचायत series is available on Netflix. So उनका मुझे message आया कि I read Urvashi Butalia's The Other Side of Silence, and it filled me with grief. And when I read your book, The Other in the Mirror, it has ignited a ray of hope in me. So this is exactly the purpose behind the project, the anthology, to so that we are hopeful, we see the positive side, and that's about it. देखें, वो तो बहुत ही खूबसूरत बात है. इस किताब को खोलते हैं ना, तो पहले आशीर्वाद मिलती है हमें गुलजार साहब की. गुलजार साहब का नाम आप ये समझिए कि दोनों मुल्कों में हर उस घर में जाना जाता है जहाँ पर किताब पढ़ी जाती है, या जहाँ पर सोचने समझने का कोई अमल होता है, और जहाँ पर ये जो हमारी सोसाइटी है इसके बारे में सोचा जाता है. तो एक लिहाज से तो इसकी किताब की जो हैसियत है वो बहुत ज़्यादा है. और एक और बात जो हमें नज़र आती है कि ये ऐसी रैंडम सिलेक्शन नहीं है स्टोरीज़ का. इस तरह की एंथोलॉजीज़ पहले भी आई हैं. ये जो काम है ये इस तरह का रैंडम सिलेक्शन नहीं है, बल्कि इस पर आपने सोच समझ के बाकायदा जो है वो लोगों को कमीशन किया है. इसकी ज़रा तफसील ज़रूर बताइए कि कौन कौन लोग हैं जो इस किताब में फ़ीचर होते हैं, और मौज़ूआत भी इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि चूँकि इसमें तनव्वुअ बहुत ज़्यादा है, तो एक एक चीज़ जो है ना वो एक किसी ख़ास मौजू पर अगर वो स्टोरी आ सकती हो, ये किया है आपने. ये स्किल आपकी, ये बड़ा काम है ये दरअसल. तो इसका ज़रा इसकी तफसील ज़रूर हमें बताइए. जी बिल्कुल. जैसे कि ये किताब स्टार्ट होती है गुलजार साहब की स्टोरी से, रावी पार. इसकी the selection of the stories was very organic. I wanted to make sure that I just wanted to avoid the Bollywood-inspired cliched narratives that come up anytime we talk about or we engage in cross-border projects. So narratives like love stories, where the girl is from this side and the guy is coming from the other side and luring her to take her back. So those patriarchal undertones is what I really want to avoid. So all the stories in this collection are socially relevant. They are written about less explored subjects. For example,
One story called Paper Boats is very close to my heart, and I would like to also mention that all the stories in this collection are originally written. So I've actually worked with the authors. We've brainstormed ideas together. And one story which is very close to my heart is called Paper Boats, which is about the issue of the fishermen community, because there are no borders in the waters. So the fishermen, whenever they cross into the other side, they are arrested, and then they have to languish in the jails on the other side for the longest, for till their all their life. Some of them die also in the jails. So till the mid of this year, there were about 930 fishermen who were languishing in the Indian fishermen in the jails of Pakistan, and a batch of 200 were released after Bilawal Bhutto's a visit to Goa, and there are about 95 Pakistani fishermen in Indian jails. So there's this story, Paper Boats, which through which we get to see the human side of their pain and their anguish. So similarly, we have another dystopian story, which is you know it's set in the time of 2040, when Urdu it has been banned in India. So you cannot speak Urdu, and this is I came up with this idea after this social media campaign which was going on last year, after a brand in India used the word of Rivaj. So there was this controversy going on that why this brand has used an Urdu word. So there is this association of languages with religions. So this story written by Dushyant, who's a Hindi author, reflects this issue. And सहर मैं बड़े होने का गलत इस्तेमाल करूँगा, मैं आपकी बात काटूँगा. आप असल स्टोरी पर आइए जो आपकी अपनी ग्रैंड मदर की है, वो ज़रा समझाएं हमें. इसलिए कि इस किताब का न्यूक्लियस दरअसल एक आप खुद हैं एज कंपाइलर, लेकिन एज एडिटर, लेकिन जो असल हमें नज़र आता है वो ये कि और वो स्टोरी इन्होंने खुद लिखी भी है, तो इसका ज़रा हमें ज़रूर बताइएगा. Yeah, so I've grown up listening to stories from my grandmother, who was from Kota, Rajasthan. So my great-grandfather was an artillery maker in the court of Maharaja Bhim Singh, who was the last ruling prince of Kota, which was a princely state since from 1940 to 1947. And my great-grandfather and their family, they did not want to come to this side, but it was a very half-hearted decision that they took at the last moment, when there was this chaos happening, and Kota was a Hindu majority area, and after this incident of a Hindu, a Muslim killing, and the person's body was hung in a chalk, so they got really panicked. So after that, they took this decision of coming to this side, and they were actually escorted by the army of the Maharaja, and they came to this side. So I've grown up listening to the stories of Kota, Rajasthan, and they actually my grandmother's stories would take me to Kota, and I would travel to Kota through her stories, and all those narrations are so vivid in my memory. And somehow, of course, her stories have inspired me to work on this anthology. And recently, I also got in touch with the grandson of Maharaja Bhim Singh Rao, and I have donated some books to the library. I just think that my grandmother, who could not go back to her city, her hometown, and there was a lot of nostalgia in her till she passed.
So that was somehow transferred in me, and I see it as a spiritual burden, जो कि एक तरह से मैंने उनको वापस वहाँ पे पहुँचा दिया through this book, which is dedicated to her as क्या well. बात। So this was it. वाह, बहुत जी। मुझे मालूम है बेटा टाइम का आप ना दिखाओ, मैं इसलिए हम तेज़ी में जो है चल रहे हैं। देखें, इनकी आपकी किताब में एक स्टोरी है, टीयर्स फ्रॉम द रिवर, साज अग्रवाल की। साज अग्रवाल का ओरिजिन सिंध से था। उनके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ से गए थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत किताब एक लिखी है, जो कि 5-7 साल पहले कराची लिटरेचर फेस्टिवल में वो आई भी थी और उस किताब का इसी तरह इफ्तिताह हुआ भी था। उनका जो कहना था, और वो बिल्कुल मानने की बात है, कि ये जो तकसीम हुई है, हिजरत हुई है, तो पंजाबी जो महाजर था उसको जब वो गया तो उसको वहाँ पंजाब ही अवेलेबल हुआ है। वहाँ से जो आने वाला था उसको पंजाब भी अवेलेबल हुआ है, पूरा पाकिस्तान अवेलेबल हुआ है, सिंध में पूरे शहर उनको अवेलेबल हो गए। अच्छी बात है। सिंधी जो हिजरत करके जाने पर मजबूर हुआ, उसको कोई ज़मीन नहीं वहाँ मिली, उसको अपनी ज़बान से को ख़राब करना पड़ा। वो ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है इस वक्त। सिंधी जो बोली जाती है वो सिर्फ यानी ऐसे बाज़ार में बोली जा सकती है, लेकिन वो एक बाकायदा ज़बान की हैसियत से वहाँ पर जो है ना वो नहीं चल सकी, इसलिए कि वो आबादी नहीं, अपना उनका सेटलमेंट नहीं हुआ। उनके दुख बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक हमारी आबादियों में से कुछ आबादियों ने इतना सफ़र भी किया है। साज अग्रवाल अपनी खुद उनको यानी ऑथर है, बहुत कमाल की उन्होंने पूरी किताब लिखी है, लेकिन ख़ुद भी उनको सिंधी नहीं आती थी। लेकिन जब वो बोलती हैं तो हमें पता चलता है था कि वो एक यानी क्या उनकी किस कदर शदीद उनका इस मामले में उनकी नोटिंग्स हैं और जितना कुछ उन्होंने मुशाहिदा किया है। आप कोई और तज़किरा जो आपने महसूस किया हो इन स्टोरीज़ के बारे में, आप अपना ज़रूर बताइएगा। अपना तो ज़रूर ही बताएं ना जी। So I have a story in this collection. It's called The Ghost, and it's a story about two border villages. One is on this side of the border and the other on that side. So there are speculations about some kind of a ghostly presence in the border areas, and the Indian side thinks that the ghost is a Muslim, and the Pakistani side thinks that the ghost is a Hindu. So the story is about the growing fear in people. When I was working on developing the story, I would like to mention Shakespeare's Hamlet, which was somewhere in my mind subconsciously. So Hamlet is considered to be the greatest tragedies ever written, but I also see it as a story about intergenerational traumas. So in Shakespeare's Hamlet, it's the father, the ghost of the deceased father, Hamlet's deceased father, who appears before him, and he informs him that I've actually not been murdered, but it was not a natural death, but I was actually murdered. How poison was poured into his ears. So we can, draw connections here with the ghost of the partition, which is still affecting us, which is still impacting us. So this is exactly where the idea of my story came from. And if we talk about poisoning the ears, so it is the fear of the imagined enemy, and it's the poisoning of the ears of the current generations, that we create this fear into the hearts and minds of people to keep them divided. So this was the larger thought behind my own story. And if there is a little time, I would like to maybe read a passage from the preface. ये तो मैं आपसे from my कहने वाला preface. था। Yeah. प्लीज़। Yeah, so this is, I'm going to read a few paragraphs from the preface. There are stories that you live
and there are stories that live with you. I've grown up with fragments of one such story, the most prized possession passed down to me by my grandmother. The story has been a guiding force through this anthology's journey. As a young girl growing up in Lahore, I always wanted to travel to my grandmother's birthplace, which happened to be on the other side of the border. I thought that my love and fascination to explore her roots would only remain a fantasy. Amidst the war hysteria and toxic nationalism prevalent in the hostile society we grew up in, it wasn't uncommon for this heartfelt desire to be trampled several times. My dream, however, seemed to be a step closer to reality when I finally got the visa and boarded the flight to India. I noticed the bright sea line mingling with the skies as I peeked out from the small airplane window on the way from Karachi to Bombay. Floating over the endless bends of the blue waters, the thin and flat boats appeared like they had been cut from paper. The sea filled me with a deep sense of longing. It seemed like the silence of the roaring tides was yearning to unleash the painful tales ensconced in the sea's bosom. Memories rippled through my mind as I lost myself in the depths of the waters. The stories narrated to me during the intimate hours spent with my grandmother started coming to life. It was sometime in mid-August 1947, my grandmother Noor Jahan, then about 16 years old, bid farewell to her homeland on a sea voyage from Bombay to Karachi. The ship was cramped with a few thousand refugees, many who knew they might never return to their homeland. Their hissing sighs and prayers resonated in the air. They were voyaging, yet nobody awaited them. Their hearts grieved over what they had left behind, and what stood ahead was an uncharted territory. بہت خوب ماشاء اللہ. دیکھیں یہ کام بہت وقی ہے اور مذہبی اصطلاح میں اس کو تذکیر کہتے ہیں. تذکیر بے ایام اللہ. یہ وقت ہیں جو انسانوں پر ہی آتے ہیں اور جو سلجھی سمجھے ہوئے ذہن ہیں وہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. تو یہ کام بہت ہی اچھا کام ہوا ہے. ایک تو ہم آپ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور کہانیاں جو ہیں یہ کہانی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ بول رہے ہوتے ہیں لیکن اگلا جو سننے والا آپ کا مخاطب ہے وہ اس کو اپنے ہی انداز سے اس کو لیتا ہے. میں تو غزل سنا کے خاموش ہو گیا, لوگ اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ ضروری ہیں. ایک تو نئی نسل کو جانی چاہیے اور ایک جو ہماری نسل ہے ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو زندہ ہی ان کہانیوں کے ساتھ ہیں کہ کیسے کیسے واقعات گزرے ہیں. میں خود میرا موضوع بڑا محبوب موضوع ہے ہجرت کا, لیکن میں جذباتی ہو جاتا ہوں. میں اس بات میں آپ اور ایک کتاب آپ کی ہے, پروگرام ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ اس پر اور کچھ آپ بھی کہنا چاہیں, کوئی ایسی چیز, یا کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک سوال بھی ہم لے لیں. اتنا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس. جی سوال. جی پارٹیشن کا اگر ایک میکرو لیول کے اوپر جائزہ لیا جائے تو پرہیپس وی لاسٹ لاٹ اینڈ دی ادر سائڈ گینڈ ان لاٹ آف سینس. اس کا حساب ہونا باقی ہے ابھی. خیر وہ حساب اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے, لیکن جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سنتھسس جو اس بک کا ہوتا گوئنگ فارورڈ وہ یہ کہ پاکستان پوائنٹ آف ویو سے کیا ہم نے گین کیا ہے کچھ فرام کلچرل پوائنٹ, فرام ایجوکیشنل پوائنٹ, فرام گورننس پوائنٹ, فرام پولیٹیکل پوائنٹ, فرام لیڈرشپ پوائنٹ. یہ میرا ایک تو یہ کویشچن ہے. اینڈ سیکنڈلی اینیموسٹی جو جتنی ڈیولپ ہو گئی بٹوین دا ٹو, وہ دیٹ پرہیپس از اے ڈینجرس ایلیمنٹ اینڈ اے سائن, کیونکہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے مور لیس وہ بہت بہتر فارم میں ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ بالکل سحر اس کا جواب دیں گی, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ادب ہے. ادب کا کام سوالوں کے جواب دینا نہیں ہوتا, سوال اٹھانا ہوتا ہے.
یہ اگر ان کہانیوں کے تھرو کچھ سوال اٹھ جائیں، آپ اور ہم اپنے اپنی جگہوں پہ خود سوچنے پر مجبور ہوں، تب جا کے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کتاب کا حق ادا ہوا ہے. سحر آپ یس، یو کریکٹلی اسٹیٹڈ کہ فکشن کا کام سوال اٹھانا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کتاب کا ٹائٹل بھی ہے دی ادر ان دا mirror. سو اٹس دی کنٹینیوس شفٹنگ آف دا blame. It's the chicken egg kind of a situation that we get into whenever we talk about this side and that side. So the other in the mirror, the title of the book reflects exactly that otherization, that we see that we villainize the other, and we think that we are right. We have this kind of a self-righteous attitude about ourselves. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وین آئی میٹ ڈاکٹر راج موہن گاندھی، انہوں نے کہا تھا وین ایور وی پوائنٹ ون فنگر ٹورڈز دی ادر، دیر آر تھری پوائنٹنگ بیک ایٹ اس. سو this the other in the mirror actually reflects that kind of otherization. So it's actually against the shifting of the blame mindset. جو otherization کا ایک mindset ہے جس میں ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں we versus them ڈائنامکس سے نکل کر ہمیں تھوڑا ان فیکٹ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. اچھی بات ہے. ٹیم ہمارے پاس کوئی ٹائم ہے ابھی؟ ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے یہ اویلیبل ہے باقاعدہ، اسٹالس پر ہمارے پاس موجود ہے، اور بہت پڑھنے کے لائق ہے. اٹس ویری ریڈیبل. آپ کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو دیکھیے. اور اویلیبل ایٹ دی لبرٹی بک اسٹال. لبرٹی بک اسٹال. جی، آئی ہوپ دیٹ یو وڈ grab a copy. آپ تمام صاحبان کا اچھا کچھ شاید سوال آ رہے ہیں. This is Mohammed Farooq from University of Haripur. My question is that on a reading of partition literature, it seems that most of these texts, they question this historical partition of subcontinent as India and Pakistan. So do you think when these readers like you, they, through their writing, they are also challenging this partition of India and Pakistan, and they reconstruct a new version of history under the lens of new historicism? So do you think it would be a kind of powerful projection and narrative to bring people closer by dismantling the concept of border, or it would be just a kind of nostalgic reconstruction that we just weep for past and we cannot transform it? Thank you. یہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت اچھا آپ کو لگے گا کہ اٹس ایک یعنی رینڈم سلیکشن نہیں ہے. تو اس میں بڑا اچھا نیوکلیس ہے چیزوں کا. میرا خیال ہے کہ اس میں سوال کے جواب کی مزید ضرورت نہیں ہے. کتاب پڑھے بغیر بات کرنے کا جو ہے نا وہ پھر وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. کتاب پڑھ لیں، اچھی ہے اور کوئی حرج نہیں، نقصان تو اس کا ہونے والا نہیں ہے. آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ. میں یہ بھی فیسٹیول کی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت سے 2 منٹ پہلے اس کو ختم کر دیں، تو ہم نے وقت زیادہ نہیں لیا آپ کا. آپ صاحبان کا بہت شکریہ. سحر آپ کا بہت شکریہ.